In the name of Subhanahu wa Ta'ala, who is Rahman and Rahim, who is Rabbul Alameen, who is the King of Kings, who is the Master of Masters, who is the real sovereign, who is the creator of all the creature in this universe. Dear listeners, ladies and gentlemen, this is me, Wajidullah. I would like to say gratitude because I can't forget about this gratitude. I would like to say gratitude to the Excellency of Mr. President Rashid Khan. He is the pioneer and the founder of this Bazme Adab program. And especially I'm also thankful to the Adnan Hakim, who is the secretary for today organizing program. So today Mr. Adnan Hakim has given me a golden opportunity to polish my confidence, my qualities, my abilities in the front of you guys. So today I have selected a very golden topic. That's a general topic that's related to our education field, that's related to our social activities, because that is what reasons for the importance of English speaking. Today is my topic is reasons for the importance of English speaking or importance of English language. So आज मैं इस टॉपिक के ऊपर बात करूंगा जो कि बहुत एक important topic है. I'm not talking about the literature, the linguistic, the history. I'm just talking about the the importance of English speaking or English language. It's a fundamental topic and basic topic for all of us. As you know, it's a very important topic. So I have underlined and highlighted some reasons for this speaking of English. The most fundamental and the most basic reason is English is very important, very compulsory for any students. इस टॉपिक का, इस हेडिंग का, इस रीज़न का मेरा मतलब ये है कि इंग्लिश क्यों हर स्टूडेंट के लिए, इन स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट है, क्यों हर स्टूडेंट्स के लिए लाजमी है. तो ये हम सब जानते हैं कि इंग्लिश जो है, अगर स्टूडेंट की बात करें तो एज यू नो दिस इंग्लिश इज studied as at the colleges level, at the universities level, at the schools level. अब हम सबको पता है कि इंग्लिश स्कूल्स में भी मतलब बोली जाती है, यूनिवर्सिटीज़ में भी, और what we can say in colleges में भी. So इसलिए इंग्लिश लैंग्वेज जो है या इंग्लिश स्पीकिंग जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट है. लेट्स सपोज अगर हमें इंग्लिश नहीं आती तो हम न बोल सकते हैं टीचर्स के साथ. Our teachers is teaching in English language, so we can't ask to them how to what about the question. We can't ask to the teachers about the question if we can't speak English, if we don't have a strong vocabulary. So therefore English language is important for any student. ठीक है, अगर हमको इंग्लिश आती है तो हम बोल भी सकते हैं, हम अपना नोट्स भी बना सकते हैं. और यहाँ पे हम एग्जांपल हम सबके मतलब सामने है कि यूनिवर्सिटी की लेवल पे बुक्स वगैरह नहीं होते, तो यूनिवर्सिटी में हम क्या करते हैं कि अपना नोट्स बनाते हैं. यूनिवर्सिटी में सिर्फ लेक्चर नोट करते हैं, फिर यहाँ पे आप अपना नोट्स बनाते हैं. तो स्पेशली फॉर सोशल साइंसेज, अगर इफ यू टॉक अबाउट द सोशल साइंसेज, अगर मैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात करूँ, मैं पाकिस्तान स्टडीज़ की बात करूँ, और अगर मैं सोशियोलॉजी की बात करूँ, सोशल साइंसेज की, क्योंकि और एज वेल एज what we can say medical field. So English language is एक बहुत लाजमी चीज़ है. अगर हमें इंग्लिश आती है तो हम अपने नोट्स बना सकते हैं, हम अच्छी तरीके से अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं, हम टीचर से गुड कम्युनिकेशन कर पाते हैं. ठीक है. सो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड फंडामेंटल रीजंस फॉर इंग्लिश लैंग्वेज, that why English is very important. English speaking is why is the most important. So English is
कंपलसरी एंड इम्पोर्टेंट पार्ट इन स्टूडेंट्स की बेस पे मैंने बात की कि यूनिवर्सिटीज़ लेवल पे भी इंग्लिश पढ़ाया जाता है, स्कूल एंड कॉलेज लेवल पे भी। तो उसलिए हर स्टूडेंट के लिए, चाहे वो हर फील्ड से हो, चाहे वो इकोनॉमिक्स से हो, पाकिस्तान स्टडीज से हो, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो, सोशल साइंसिस हो या मेडिकल साइंसिस हो, सो हर स्टूडेंट के लिए ये इंग्लिश लैंग्वेज जो है या इंग्लिश स्पीकिंग जो है हर स्टूडेंट के लिए लाजमी है, क्योंकि आपको पता है कि इंग्लिश इज़ अ कंपलसरी सब्जेक्ट हर डिपार्टमेंट में पढ़ा